Assalamu alaikum class. Today we are discussing the chapter number 2, translation of the chapter number 2, like responsibility of youth in nation building. In the previous lecture, we have translated the paragraph number 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 and 4. Now we discuss and translate the paragraph number 5 and 6 of the chapter number 2. So let's start our lecture. Responsibility of youth. Paragraph number 5. Your main occupation should be in fairness to yourself. Your main occupation, आपका बुनियादी मशगला should be in fairness to yourself. अपने साथ इंसाफ करते हुए. fairness मतलब इंसाफ करते हुए. in fairness to your parents, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करते हुए. and indeed in fairness to your state, और हकीकत में रियासत के साथ इंसाफ करते हुए. to devote your attention devote का मतलब होता है मरकूज करना. attention तवज्जो solely on in your studies, अब सिर्फ अपनी तवज्जो जो है तालीम पर मरकूज करना. आपका बुनियादी मशगला अपने साथ इंसाफ करते हुए, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करते हुए और दर हकीकत रियासत के साथ इंसाफ करते हुए सिर्फ अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज करना होना चाहिए. It is only thus, ये इसी तरह से, सिर्फ इसी तरह से, you can equip yourself for the battle of life that lies ahead of you. सिर्फ इसी तरह से that lies ahead of you, अपने सामने आने वाली battle of life, जिंदगी की जदोजहद के लिए. equip yourself, खुद को तैयार कर सकते हैं. सिर्फ इसी तरह आप अपने सामने आने वाली जिंदगी की जदोजहद के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं. Only thus you will be an asset and a source of strength and pride to your state. सिर्फ इसी तरह, only thus, सिर्फ इसी तरह, you will be asset का मतलब होता है असासा, रियासत का असासा, and a source of strength, ताकत का सरचश्मा, and a pride of your state, और सरचश्मा या रियासत का जो है pride, फख्र. इसी तरह से आप रियासत के लिए एक असासा, ताकत का सरचश्मा और फख्र का बाइस बन सकते हैं. Only thus, इसी तरह, सिर्फ इसी तरह, can you assist का मतलब होता है मदद दे सकते हैं. in solving, हल करने में, the great socio economic problems, अजीम समाजी और माशी मसाइल को हल करने में मदद दे सकते हैं. that confronted, जो इसके सामने है, enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nation of the world. जो इसके सामने है, enable का मतलब होता है कि मावन पहुंच जाना. to reach its destined goal, मंजिल तक या मुकद्दर के मुताबिक मकाम तक. the most progressive and strongest nation of the world, दुनिया की तरक्की याफ्ता और ताकतवर तरीन अक़वाम में. तो इस क्लास लाइन का ये है कि सिर्फ इसी तरह से आप इन अजीम समाजी और माशी मसाइल को हल करने में मदद दे सकते हैं जो इसके सामने हैं, और इसे दुनिया की तरक्की याफ्ता और ताकतवर तरीन अक़वाम में इसके मुकद्दर के मुताबिक मकाम तक पहुँचने में मावन साबित हो सकते हैं. सो ये पैराग्राफ नंबर 5 था. इसकी एक दफ़ा ट्रांसलेशन को हम देख लेते हैं. लाइक आपका बुनियादी मशगला अपने साथ इंसाफ करते हुए, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करते हुए और हकीकत रियासत के साथ इंसाफ करते हुए सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज करना होना चाहिए. सिर्फ इसी तरह अपने सामने आने वाली ज़िंदगी की जदोजहद के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं. सिर्फ इसी तरह आप रियासत के लिए एक असासा, ताकत का सरचश्मा और फ़ख्र का बाइस बन सकते हैं. सिर्फ इसी तरह आप इन अजीम समाजी और माशी मसाइल को हल करने में मदद दे सकते हैं जो इसके सामने हैं, और इसे दुनिया की तरक्की याफ्ता और ताकतवर तरीन अक़वाम में इसके मुकद्दर के मुताबिक मंजिल तक या मकाम तक पहुँचने में माविन साबित हो सकते हैं. So let's start the paragraph number 6. My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. मेरे दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको कुछ नकात बताना चाहूँगा about which, जिनके बारे में you should be vigilant and be aware, आपको चौकन्ना और होशियार रहना चाहिए.
میرے نوجوان دوستوں، اس لیے میں آپ کو کچھ نکات بتانا چاہوں گا جن کے بارے میں آپ کو چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ فرسٹلی، پہلا پہل، beware of the fifth columnist۔ columnist کا مطلب ہوتا ہے غداروں۔ among us، آپ اپنے اندر۔ پہلا، اپنے اندر کے غداروں سے ہوشیار رہیں۔ سیکنڈلی، دوسرا، گارڈ اگینسٹ مطلب محافظ رہے۔ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل مطلب کا ہوتا ہے کہ انہیں نشانہ بنائے، خود غرض لوگوں کو۔ دوسرا، خود غرض لوگوں کے خلاف محتاط رہے اور انہیں نشانہ بنائے۔ who only wish to exploit you، جن کا صرف مقصد کیا ہے، استحصال کرنا، آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ so that they may swim، تاکہ وہ خود کو بچا سکیں۔ سو اس لائن کا ہے کہ دوسرا، خود غرض لوگوں کے خلاف محتاط رہے اور انہیں نشانہ بنائیں جو صرف آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود کو بچا سکیں۔ تیسرا، learn to judge، سیکھے who are really true and really honest and unselfish servants۔ سیکھیں کہ ریاست کے یا اسٹیٹ کے سرونٹس آف دا اسٹیٹ، ریاست کے سچے، ایماندار اور بے لوث خادموں کو پہچانیں کہ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ who wish to serve the people with heart and soul and support them، جن کی خواہش یا مقصد to serve the people، لوگوں کی خدمت کرنا، with heart and soul، دل و جان کے ساتھ، and support them، اور ان کی حمایت کرنا ہے۔ جن کا مقصد دل و جان سے خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی حمایت کریں۔ اس کو دوبارہ سے کر لیتے ہیں کہ میرے نوجوان دوستوں، اس لیے میں آپ کو کچھ نکات بتانا چاہوں گا جن کے بارے میں آپ کو چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ پہلا، اپنے اندر کے غداروں سے ہوشیار رہیں۔ دوسرا، خود غرض لوگوں کے خلاف محتاط رہیں اور نشانہ بنائیں جو صرف آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود کو بچا سکیں۔ تیسرا یہ کہ ریاست کے سچے اور ایماندار اور بے لوث خادموں کو کیسے پہچانیں جو عوام کی دل و جان سے خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی حمایت کریں۔ جو پیراگراف نمبر 7 ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔